Good morning, dear students. Welcome to chemistry class. Children, in the previous class, we were doing the uses of metals and non-metals. So we have covered metals, few were left. That was our homework to read. Okay. Now I'll quickly go through the uses of non-metals first, non-metals and metalloids. And after that, we are left with three topics, that is corrosion, rusting and alloys. Okay, so today we will see what is the difference between corrosion and rusting, what is the process of corrosion and rusting, and what is alloys. Okay, so after this we will complete the explanation of this chapter and we will be left with the exercise. So exercise we are going to do tomorrow. Okay, so children, let's start with it. So I'll quickly go through the uses of non-metals. So because you have to learn it and it is very practical and it is application based, so you already know it. So I'm just going it very quick what is important here, and then we will come to the next topic for today, that is corrosion and rusting. So children, this we have seen uses of zinc, uses of copper that we have seen. Okay, lead, chromium, nickel, titanium, mercury. This is your homework to read. Okay, if you don't understand anything, if you come across any kind of doubt, you can ask anytime, you know that. Now coming on to the common uses of non-metals. So if we take silicon, children, silicons are basically used in electronic devices. Okay, so in a small chips, like microchip that we use in a computer devices, that where the silicon is used in a transistor, in a microchip, in a solar cell, silicons are used. Okay, children, even nowadays, in certain new items, if you see, there are certain silicon gels present. ठीक है, उसमें एक white wrapper में wrapped होता है, वो silicon gel होता है, that is also made up of silicon. Okay, so it is used for manufacture silicons which are used for making waterproof clothes, greases, polishes and insulating material for electrical appliances. Okay, there are certain storage items are also made up of silicon, like as a children, in friendship day, so you tie a friendship band to your friends. Okay, so there is one type of friendship band that is of plastic, it is of a plastic material. I'll show it to you. That is also not pure plastic, but it is made up of silicon. So as you can see in the figure here, these small microchips contain silicon. This solar cell contains silicon. These some storage material like baskets and all, they are also made up of silicons. And also children, this friendship band, you see, this type of friendship band, so they are not purely made up of plastics, they contains few amount of silicon also. Okay, so they contain silicon. So I think now you are clear with what is silicon. Coming back to the chapter, uses of sulfur. Sulfur कहाँ use होता है बेटा? Sulfur is basically used in preparing sulfuric acid first thing, and by using the industrial process. It is used in vulcanization of rubber. What is vulcanization of rubber is making the rubber hard enough to be used in the tires. See, we know that tires में भी rubber use होता है, साइकिल के टायर में rubber use होता है. So vulcanization of rubber is making the rubber so hard, उसमें सल्फर ऐड कर करके और सल्फर की बॉन्डिंग कर करके हम रबर को इतना हार्ड कर देते हैं कि हम उसको ट्यूब्स में और टायर्स में यूज कर सकें. ओके, देयर सल्फर इज यूज्ड. नाउ इट इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स. ऑइंटमेंट्स में भी यूज होता है बेसिकली. जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम जो ऑइंटमेंट्स लगाते हैं उसमें बेसिकली सल्फर कंटेंट होता है. ओके, then in insecticides and fungicides also there is some content of sulfur. Phosphorus, children, it is very important. Somebody has asked me the question also that phosphorus is used in making matchbox. तो आप लोग ने matchbox देखा है? Matchbox के जो साइड में होता है जहाँ पे हम
मैचस्टिक को स्ट्राइक करते हैं, here, that contains phosphorus. Basically phosphorus calcite होता है उसमें, so it contains phosphorus. Okay, the tip of a tip of a matchstick also contains some amount of phosphorus. It is used in the manufacture of phosphate in fertilizers. For जो phosphate के fertilizers बनते हैं उसमें भी phosphorus use होता है. Carbon is basically used as a graphite in the lead of a pencil. Okay, as an electrode it is used in a dry cell. As a lubricant also it is used. Carbon as a diamond we use. Carbon as a charcoal. Carbon as a coal. We use a student. Carbon is having n number of importance. Okay, in extraction of metals, like this is hydrogen, I think. So by this, these carbon are used. Now hydrogen is used in ammonia gas. What is the formula of ammonia? It is NH4. This is ammonia. So ammonia gas also includes hydrogen. ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में यूज होता है, हाइड्रोजन की गैसेस आती है, हाइड्रोजन गैस यूज होता है, बल्ब्स में यूज होता है, वैक्यूम क्रिएट करने में यूज होता है. सो हाइड्रोजन इज यूज्ड एनीवेयर. ओके, so this was few uses of non-metal. Children, please go through it because I have winded up very quickly. uh, don't think that it is not important. It is important, but you have to learn it. Okay, there is nothing to explain, so you have to learn it. Okay, now coming on to noble gases. Sorry, noble metals. So children, there are certain metals which are present bottom of the reactivity series. So सबसे नीचे कौन से होते हैं? Mercury, silver and gold, isn't it? तो silver और gold सबसे नीचे होता है. They are least reactive. वो क्या होते हैं? Least reactive होते हैं. वो किसी से भी react नहीं करते, इसलिए हम उनके ornaments और jewelries बनाते हैं. ठीक है? These metals are called noble metals. इनको हम क्या बोलते हैं? Noble metals. So gold, silver, platinum are called noble metals. Okay, noble metals से basically हम ornaments बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये reactive नहीं होते हैं, और अगर ये किसी से react नहीं करेंगे तो ये अपना shine और luster नहीं खोते, इसलिए ये noble metals होते हैं. Like silver and gold and platinum, these three are noble metals. Okay, now gold and silver are also used to give a decorative and protective coating on other metals, that is electroplating. So electroplating of gold or silver भी होती है. This we have studied in the previous chapter. Okay, gold और silver के coins बनते हैं, platinum के gadgets बनते हैं, platinum की rings भी बनती हैं children, platinum iridium alloys बनते हैं. Alloys क्या होता है? Alloy is a mixture of two or more metals. जब दो या दो से ज्यादा metals को हम mix कर देते हैं तो it is called alloy. We'll study in the like last topic of this chapter. Okay, so being highly prized, a number of people invest their money in noble metals for ornaments made from them, especially in the times when economy is not doing well. So children, if you see in many of the places, in many of the houses, during Diwali, जब धनतेरस होता है तो घर में जनरली गोल्ड के बिस्किट्स या गोल्ड के कॉइन्स खरीदे जाते हैं, so that it acts as a preserve, like we preserve it. This is an investment of money कि हम उसको अपने पास रखते हैं ताकि जब भी हमें काम पड़े तो we can sell it off and take the money. Okay, so we generally purchase these gold and biscuits, gold and silver biscuits or coins as an investment. Okay, so these are the noble metals. There are three noble metals: gold, silver and platinum. Why they are called noble metals? Because they are least reactive, they are unreactive, और इनसे हम क्या बनाते हैं? Ornaments बनाते हैं, coins बनाते हैं, इसकी electroplating करते हैं. Okay, so this is the noble metal. Now children, the very important topic of this chapter, that is corrosion and
Rusting. So many of you get confused what is corrosion and what is rusting. So let me quickly just clear your doubts and clear your confusions. What is corrosion and what is rusting? Children, first of all, listen to me. What is corrosion? Corrosion क्या होता है? जब भी कोई मेटल धीरे धीरे खराब होने लगे, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, अगर वो धीरे धीरे खराब होने लगे, दो सिल्वर और गोल्ड जल्दी खराब नहीं होते हैं, बट यस सिल्वर कैन गेट अफेक्टेड इफ इट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एयर एंड मॉइस्चर. सो लेट मी कम टू द बोर्ड फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Okay, coming to rusting and corrosion. So if you talk about rusting and corrosion, children, तो corrosion क्या होता है पहले ये समझिएगा. And what are the important points in corrosion? So first very important thing in corrosion is it decays the metal. ये क्या करता है? किसी भी मेटल को डिके कर देने का मतलब होता है खराब कर देना. ठीक है? खराब करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है कि वो मेटल एयर एंड मॉइस्चर से एक्सपोज्ड होना चाहिए. एयर और मॉइस्चर की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एंड वाटर. सो इफ एनी मेटल इज in contact with oxygen and water together, so it will get decayed. वो खराब हो सकता है. ठीक. Now why I am talking about metal here is because metals are children. Metals are highly reactive in nature. So because they are reactive, they can easily react with oxygen and water and get corroded. ठीक है, या इसे कहते हैं कि ये खराब हो सकता है. ठीक. So this is called corrosion, and there can be any metal. We can use copper, silver, aluminium, okay, any such metals. अगर ये खराब हो रहा है, so it is called corrosion. क्या बोलते हैं इसको हम? corrosion. अब रस्टिंग क्या होता है बेटा, समझिएगा. अगर यही corrosion की प्रोसेस आयरन में हो, if the process of corrosion takes place in iron, okay, अगर हम सिर्फ आयरन की बात करें और अगर आयरन खराब हो रहा है, आयरन डिके हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. सेम प्रोसेस है जो corrosion की है, लेकिन अगर ये आयरन के केस में है, सो वी कॉल इट एज रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज बेसिकली द corrosion ऑफ आयरन, लेकिन हम इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. ठीक है, अगर आयरन है तभी, कॉपर सिल्वर ऐसा कुछ है तो नहीं बोलेंगे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आयरन. ओके. सो children, why it is called rusting? Because let's see, there are two reactions. If we talk about the reactions here, so there are two reactions. First, iron will react with oxygen to form its oxide, that is Fe2O3. ठीक है, ये क्या है? This is oxide of iron. Okay. Now the second reaction is this oxide of iron will react with X number of water, X molecule of water. So this will become Fe2O3 dot XH2O. And children, this is called rust. क्या बोलते हैं हम इसको? Rust बोलते हैं. This is called rust. Okay, and it is very important. Fe2O3
dot XH2O is called rust. ठीक है? That is why when iron gets decay, it is called rusting of iron. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Rusting of iron. This reaction is important, children. So iron, when reacts with oxygen from oxides of iron, Fe2O3, that is Fe2O3 again reacts with X molecule of water, so it gives Fe2O3 dot XH2O, that is called rust, and hence it is called rusting of iron. Okay, I think it is clear to you. तो अगर कोई भी दूसरा मेटल खराब हो रहा है जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन. अगर आयरन खराब हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग. यही डिफरेंस होता है रस्टिंग और कोरोजन में. एक डिफरेंस और होता है कि अगर आयरन खराब हो रहा है तो वो सिर्फ आयरन का ऑक्साइड बनाएगा. अगर आयरन खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने उसका ऑक्साइड बनाया है. बट if there is a process of corrosion taking place, then it may react with any other substance like sulfur or oxygen also. Okay, so there can be a reaction with sulfur. Basically, if we talk about silver, Ag is silver, so it basically gets corroded in the presence of sulfur, that is H2S. So it forms Ag2S. Okay, so by this way it can get corroded. Is it clear, children? So this is called corrosion and rusting. This is the difference between corrosion and rusting. अगर हम आयरन की बात करेंगे, so it is called rusting, else it is called corrosion. Okay. Now, not always the corrosion is bad. In case of aluminium, क्या होता है कि जब एल्युमिनियम दैट इज Al, जब इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आती है विच फॉर्म्स Al2O3, तो ऐसा नहीं होता है कि ये एल्युमिनियम को खराब कर देगा. ठीक है, तो एट टाइम्स corrosion is good. Okay, so basically corrosion of aluminium is good because एक बार अगर किसी एल्युमिनियम शीट पे उसके ऑक्साइड की लेयर आ गई तो उसके बाद दिस ऑक्साइड लेयर will prevent further corrosion. Okay, but if one layer of aluminium oxide is coated over the aluminium sheet, then further no corrosion can take place. So in case of aluminium it is good. Basically in case of aluminium it is not called corrosion. The process is called anodizing of aluminium or anodization. Clear, children? This is called anodizing of aluminium or anodizing of like aluminium only. Okay, so this process we will study after a bit. Okay, so I'll show you few figures. So just see here, children. So this is copper. ये कॉपर की क्लॉक थी. ठीक है, कॉपर के बहुत सारे यूटेंसिल्स भी होते हैं. अगर आप काफी टाइम बाद उसको देखो, अगर वो एयर और वाटर से एक्सपोज्ड हैं, if they are exposed to air and water, so you will see these blue patches. You can clearly see these blue patches. Okay, this is because of corrosion. This is called corrosion when copper has reacted with air and water. So this is called corrosion of copper. This is corrosion of copper. Okay, now this is a silver spoon. ये क्या है? सिल्वर स्पून है. अगर आप सिल्वर स्पून को भी
काफी टाइम तक एक्सपोज करो। बेसिकली सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये जनरली खराब नहीं होता है। ये तब तक खराब नहीं होता है जब तक एयर में सल्फर का कंटेंट ना आ जाए। ठीक है, अगर एयर में सल्फर का कंटेंट आ गया, इफ देयर इज एनी tinge of sulfur in the atmosphere, then this silver will get corroded. ओके, ये देख रहे हो इसके ऊपर एक अलग सा कलर आ गया है, ब्राउन कलर का। दिस इज कॉल्ड corrosion of silver. ओके, क्लियर? नाउ these are iron nails. ये क्या है? आयरन की नेल्स हैं। ठीक, सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट एज corrosion. हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी आयरन खराब हुआ है, ठीक है, इसको लेकिन हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे क्योंकि ये एक्सपोज था एयर और वाटर से। ठीक है, एयर एंड वाटर दोनों से ये एक्सपोज था, तो इसने क्या बना लिया? Fe2O3.XH2O, which is called rust. That is why it is called rusting of iron. Okay, now children, there is one experiment to prove that for rusting of iron, both air and water are required. So to prove it, there is one experiment. So first we'll see the experiment here. So what we have to do, we have to take 3 test tubes, 1, 2 and 3. Mark it as A, B and C. Okay, now in test tube A, we are going to add calcium substance. Okay, there is one calcium documate substance that we are going to add. Okay, and we'll put a iron nail, और iron nail ऐसी रखेंगे जो कि पहले से rusted ना हो. So we are putting a iron nail here which is not rusted. In test tube B, what we are going to add, in test tube B we'll add a distilled water. This is a distilled water and some amount of grease, that is oil. हम इसके ऊपर क्या रख देंगे? ऑयल. क्यों रखते हैं ऑयल? ताकि कोई भी फर्दर एयर ड्रॉपलेट्स इसमें मिक्स ना हो. एंड देन अगेन विल पुट द iron nail. Clear? In test tube, and also we'll cover the test tube with cotton or a cork. से हम कवर कर देंगे इसको. In test tube C, we'll only put the tap water. This is a tap water, and again we will put the iron nail here and cover the test tube. Now we'll leave it for almost 7 days. So after a week, if we will observe, then what we will see that there is no color change in A and B, but the iron nail of C, the iron nail of C has become rusted. इस पे क्या आ गया है? इस पे ब्राउन कोटिंग आ गई है of rust. Clear? Why? Because see, the substance that we are adding here act as a dry air. यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे water नहीं है. यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंडीशन में, so we have water but air के molecules नहीं है. But here both, because it is a tap water, air is also present,
oxygen is, or like water is also there. Air and oxygen both are same thing. So air is also there, water is also there, both are present. That is why this iron got rusted. Okay, इन दोनों कंडीशन में इसलिए रस्टिंग नहीं हो रही थी. So this is the experiment to prove that iron, like water and oxygen, both are required for the iron to get rusted. Okay, so this is the experiment. Children, I have also shown you the diagrams. Now, to avoid the corrosion and rusting, there are certain methods. So what are that methods? Let's see the chapter. So to avoid the rusting and corrosion, generally the substances are painted. क्या कर देते हैं हम उसको? पेंट कर देते हैं, या हम उस पर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं. पहली चीज तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप उसको रस्टिंग करना नहीं चाहते हो तो आप उसको एयर और मॉइस्चर से दूर रखो. ठीक, लेकिन अगर आप ऐसा कोई चीज बना रहे हैं टाइप, फॉर एग्जाम्पल द गेट, अगर आप गेट बना रहे हो अपने घर का या कहीं का भी, तो अगर उसमें आयरन तो यूज होगा ही, isn't it? So to prevent it, what we do, we paint it. तो जब पेंट हो जाता है तो वो एयर से एक्सपोज्ड नहीं होता है या वाटर से एक्सपोज्ड नहीं होता है. So it does not get in touch with air and water. So it will not get rusted. But if in any case पेंट अगर छूट गया या उसका ऑयल और ग्रीस छूट गया, so that area will start to get corrode. Okay. Now covering with another metal, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि कोरोड होने वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, नॉन कोरोसिव मेटल से हम उसको कोट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन द कोटिंग ऑफ क्रोमियम. ठीक है, तो कोई भी हमने आयरन की या स्टील की हमने सब्सटेंस बनाया और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी. सो बिकॉज क्रोमियम इज नॉन कोरोसिव तो उसमें कोरोजन नहीं होगा. ओके, अनदर मेथड इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली वी कोट द आयरन विथ जिंक. तो आयरन की शीट को वी डिप इट इन अ मोल्टन जिंक सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्या हो जाता है, उस आयरन पे जिंक की कोटिंग हो जाती है and this is called galvanization. Okay children, electroplating we are clear with. chromium की electroplating करते हैं, tin की electroplating करते हैं, we have already seen it. Okay, now the thing I was talking about, this anodizing of aluminium, कि अगर हम एल्युमिनियम की, तो प्रोसेस इज सेम लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वैसे ही हम एनोडाइजेशन भी करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोसेस, ये देखो, दिस इज द प्रोसेस. व्हाट वी डू, वी पास द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, वी पास द, जस्ट अ मिनट, वी पास द इलेक्ट्रिक current, will take the electrolyte as sulfuric acid, that is H2SO4, will take aluminium as a cathode. We take aluminium as a cathode. Okay, और जिस पे हमको प्लेटिंग करनी है उसको हमने एनोड बना लिया. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास, तो क्या होगा, इस पे ऑक्साइड की, बिकॉज ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, तो इसके ऊपर क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी. देयर विल बी अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एंड वंस देयर इज अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसके ऊपर फर्दर कोई करोजन नहीं होगा. क्लियर, नो फर्दर करोजन कैन occur. So this is called anodizing of aluminium. Clear? So children, we are still left with one topic, that is alloys. Okay, so that we are going to cover tomorrow, and we'll also do the exercise tomorrow. Okay, so I hope you have understood it. Please read
corrosion and rusting, this is very important topic of this chapter. So please read each and every line. अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, children please do ask in the group, because you are going to have your exams and very less time is left. So please start studying. Paper is not that easy. Okay, so that's all for today's class. Thank you and Jai Hind everyone.